Yeah, it must be nice to end the year on a good note. Ritu, we have questions from the Indian media here for you. I'm going to read them out to you, okay? First question from Times of India. You have ended the season on an unbeaten note. What are the positives you want to take for the next season? वो बोल रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पूछ रहा है कि आपने सीजन क्या मजेदार नोट पे खत्म किया है इसका जो सबसे पॉजिटिव्स है वो आप कौन सा लेना चाहोगी? मैं वैसे यही कहूंगी कि मैं अपनी जीत को स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं यही चाहूंगी कि 2021 मेरा 2020 से भी बेहतर हो और जो मेरा ड्रीम है वो मैं 2021 में अचीव कर लूँ. ठीक है. Jenny, she says that और भी कुछ है positive learning जो आप बोलना चाहोगी? Okay. Jenny, she says that step by step she's moving forward. This year has been an incredible year for Ritu Phogat, and she's just hopeful and she just wishes that year 2021 will be much better than 2020 because she's slowly and gradually moving towards her dream. She wants to shatter her dream and she thinks that 2021 is way better than 2020. This is just a trailer of what is in store for her fans and, for her audience. Follow-up question from the Times of India. Jomary started as an underdog in today's bout, but she has been a wushu player. What was your strategy going into this bout? जैसी मेरे और मेरे कोच ने जो प्लान हमने इस मैच के लिए बनाया था तो वो प्लान के अकॉर्डिंग मैंने किया और फर्स्ट राउंड में ही मैंने उसको टेको किया तो सभी प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही हुआ. Okay, ठीक है. Jenny, she says that just like she had strategized, just like she had planned with her coach, she followed it to the T, and that's how she was able to take on Jomary Torres. And it was only the lessons, it was only the plan that was done much beforehand that was followed that helped her with the win today. We got two more questions from Times of India. The next one here is, you have been in Singapore for a long time now during the entire lockdown period and also missed your sister's wedding. Is there any plan of returning home now? बिल्कुल मैं यही चाहूंगी कि मैच के बाद मैं इंडिया जाऊं और एक बार फैमिली से मिलूं क्योंकि अभी काफी लंबा टाइम हो गया तो मैं पहले मैं फर्स्ट यही देखूंगी अगर मैं वापिस सिंगापुर आती हूँ अगर मेरे को क्वारंटीन नहीं करते हैं तो मैं इंडिया वापिस जाऊंगी बिकॉज अगर मैं कुछ 2 वीक का रेस्ट लेके यहाँ से जाऊंगी फिर 14 दिन अगर वापिस आऊंगी क्वारंटीन होगा तो मेरा 1 महीना वेस्ट हो जाएगा तो अगर मेरा 1 महीना मैंने ट्रेनिंग नहीं की तो मैं 3-4 महीने पीछे चले जाऊंगी जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि आगे कंपटीशन और भी ज्यादा हार्ड होते जा रहे हैं तो मैं अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करना चाहती और मैं चाहूंगी कि मैं कुछ टाइम के लिए 1 वीक या 2 वीक के लिए घर पे होके आऊं. Let's see. Okay. So Jenny, she says yes, she's definitely looking forward to go to India. It's been some time that she's been in Singapore. She would at least want to go to India for a week or 2. But she is mindful of the restrictions imposed on travel right now because she doesn't want to get home and get quarantined because she will be missing out on her training. And for that reason, she fears that, a week or 2 loss of training might push her back by some months maybe. And she just anticipates the fight to get more difficult and much tougher from here on. One more question here from Times of India. In India, MMA is still in a very nascent stage. Do you plan to open an academy to groom a few youngsters? अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है लेकिन मैं ये चाहूंगी कि फ्यूचर में मैं क्योंकि इंडिया में मिक्सर मार्शल आर्ट के बहुत सारे हैं लेकिन उनको कोई प्रॉपर एकेडमी नहीं है कि वो कहाँ पे एमएमए की ट्रेनिंग करें तो मैं इन फ्यूचर में भविष्य में चाहूंगी कि वहाँ पे जो भी एमएमए में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं एक एकेडमी खोल लूं. Okay. So nothing on cards as of now, but definitely her vision down the line is to put up, is to open an academy for Indians
there are a lot of MMA aspirants in the country, and yes, they definitely need a platform to come out and showcase their mettle and their skills. And definitely Ritu Phogat will look at this in the future, but nothing at the moment. Our next question here from Kevin Estrada. And the top 5 contenders in the women's atomweight, who is your dream fight? मैं बस यही चाहूंगी कि जो भी मेरे बेस्ट से बेस्ट जो भी एथलीट है मेरे उसके साथ हो, और मैं अपनी हार्ड वर्क कर रही हूँ, और जो भी मतलब हर अपोनेंट मेरे लिए एक टफ होता है, हर अपोनेंट मेरे लिए एक न्यू चैलेंज होता है, तो मैं किसी को भी कम नहीं समझती, और मैं यही चाहूंगी कि जो भी अच्छा हो मैं उसके साथ फाइट करूँ. Okay. Jenny, she says that there's not a particular name that she'd want to pin down right now, but she thinks that every opponent that she fights, every opponent she faces in the circle is a challenge for her, is equally as big a challenge as any dream opponent would be. So she doesn't want to disregard anyone, and she thinks that she's just going to be working harder and harder from here on. And will consider every opponent that comes her way as a dream opponent. And that's how she's going to be performing in the circle now. This next question here is from Doug out Philippines. We've seen Jomary during the half guard for most of the bout. How were you able to find the opening to land those elbows and forearms? मेरा जो ग्राउंड जो गेम है वो मेरा काफी स्ट्रोंग है, और मैंने वही चीज की, मैंने उसको हाफ गार्ड से कंट्रोल करके, और जैसे मेरे कोच ने मेरे को सिखाया है मैंने वही चीज की, एल्बो से उस पे कंटिन्यू उसको एल्बो से उसको कंटिन्यू में मार रही थी, और वो सक्सेस भी हुआ, और वहां पे उसने गिव अप कर दिया. Okay. So Jenny, she says that her ground game is one of her strengths, and she's used the half guard control to get a dominance over her opponent. Also, she used the power of her elbow to pin her opponent down, and she's followed the lessons given by her coach. These were the very things that they discussed before the match, and she's followed it during the course of the match. Jonathan from ESPN with this question. What were the challenges of taking a fight on short notice, and what are your targets for next year? जो मेरी अपोनेंट थी जोरी, वो काफी अच्छी स्ट्राइकर थी, मतलब वो फ्री स्टाइल थी, वो मेरे लिए एक न्यू चैलेंज थी, लेकिन मैंने अपना हार्ड वर्क कर रखा था, मैं कॉन्फिडेंस थी, और उसके स्ट्राइकिंग गेम से मेरा जो ग्राउंड गेम है वो उस पे हैवी हुआ, और आज मेरा दिन था तो मैं जीत गई. और मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि 2021 में मैं जो ड्रीम लेके आई हूँ वो 2021 में वो उसको कंप्लीट करूँ, उसको अचीव करूँ. ओके, वो और पूछ रहे ना, आपका क्या फायदा था ऐसे इतने छोटे समय में आपने ये मैच के लिए आपने हाजिरी दी? क्या? सॉरी, वो बोल रहे हैं इतने छोटे समय में, छोटे अरसे में आपने मैच की हाजिरी दी है, इससे आपका क्या एडवांटेज हुआ, ये क्या बेनिफिट सोच के आपने मैच की हाजिरी दी है? नहीं समझी. वो इतने छोटे समय में आपने मैच ये साइन अप जो किया है ये मैच के लिए, ठीक है, 1 महीने के बाद मतलब दूसरा मैच, राइट? यस, करेक्ट. इससे आपका क्या एडवांटेज हुआ है वो पूछ रहे हैं. बिल्कुल, मेरा मतलब 1 मंथ में मेरा दूसरे मैच आ गया, क्योंकि मैंने लास्ट मैच में बाद मैंने अपने आप को फिट देख रही थी, और मैं नेक्स्ट मैच के लिए रेडी थी. तो मैं यही कहूंगी कि इस मतलब हर मैच मेरे को एक न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू कॉन्फिडेंस देता है, तो इस मैच से मैं कुछ सीख के भी जा रही हूँ, और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा हाई हुआ है. ओके, ठीक है. So Jenny, she says that the whole idea, the advantage of taking up a match on short notice was that it posed to be a new challenge for her, and it just helps her gather her share of experience, and she's just gotten more confident after this match, and she's going ahead with skills that are more honed, skills that are more chiseled now. Another thing is completely she takes every match because she thinks it's a learning experience, and these new challenges just help her in her journey to get stronger and tougher. Sports Kita with this question. When does she envision herself fighting for the atomweight title?
Another one follow-up question is, what was the strategy for the fight against Torres tonight, as she is a well-known Sambo champion? Okay. रितु, आप कब देखते हो अपने आप को एटम वेट टाइटल के लिए लड़ते हुए? आप आप अपने आप को कैसे सोचते हो कि आप एटम वेट टाइटल के लिए कब लड़ पाओगे? और दूसरा है कि आपका आज का मैच के लिए स्ट्रैटेजी क्या था जोमे टोरेस के अगेंस्ट? मैंने और मेरे कोच ने जो प्लान बनाया था इस मैच के लिए वो सक्सेस हुआ। इस मैच में मैंने लो किक भी इसमें यूज की है और थोड़ी बहुत स्ट्राइकिंग करके, और जो प्लान बनाया था ग्राउंड मतलब ग्राउंड में ले जाकर उसको कंट्रोल करके एल्बो से फिनिश करना, तो वो चीज़ मैच में वो चीज़ वैसे ही जैसा प्लान किया था। और मैं यही चाहूंगी कि 2021 में जो सबसे पहले जो ग्रैंड पिक्स में जो टॉप 8 सिलेक्ट होंगी, तो मैं यही चाहूंगी कि उन टॉप 8 में मैं अपनी जगह बना पाऊं और स्टेप बाय स्टेप मैं अपने ड्रीम के नजदीक पहुंचूं। Okay. So Jenny, she says that yes, she does envision herself to play for the Grand Prix atomweight at the earliest, and her performance is reflective of her final goal, of her final focus, which is the Grand Prix atomweight championship. And she's working really hard to be shortlisted among the top 8 contenders. And she's working hard day in and day out. She's toiling day in and day out. She's training to find her position among the top 8 for the Grand Prix atomweight championship, and it will happen sooner than one can anticipate. And with regards to her strategy today was she used striking and locking to dominate over her opponent. Also, ground control is something she really banked on today during the fight, and she took on the opponent by using the force of her elbow, so to say. Yeah, Ritu's been dominating her opposition. I think she's definitely in the short list for females in that atomweight Grand Prix. This is a question from Brian Yaluk. Is there any part of your fighting style that you feel needs improvement, and how do you plan on working on them? Okay, रितु, ऐसा कुछ है जिस पे आप काम करना चाहोगे और थोड़ा और बेटर बनाना चाहोगी? ऐसा कुछ पार्ट है आपके स्किल्स का? बिल्कुल। अभी मतलब अगर मेरे को ऑटोमेट में टॉप तक पहुंचना है तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मुझे वर्क करना है। और इस मैच के बाद मुझे स्ट्राइकिंग में भी काफी कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है और ग्राउंड गेम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो अभी इस मैच के बाद मैं अपने इन चीजों पे काम करूंगी। Okay. Striking is something definitely she thinks there is room for improvement, and she will focus on getting stronger in this particular area. She's going to be focusing on turning this into one of her strengths. This one's from Jude of Overtime Heroics. Congratulations on an impressive win. While fighting, did you feel like Jomary Torres was the toughest test of your career? I'm sorry, I didn't catch the question. It's okay, I got you. This question is from Jude of Overtime Heroics, and he says, congratulations on an impressive win. While fighting, did you feel like Jomary Torres was really the toughest test of your career? Okay. रितु बोलते हैं, क्या जोमारी टोरेस सबसे कड़क अपोनेंट थी जिससे आपने फेस किया आज सर्कल में? मेरे लिए हर एक करियर में बोल रहे हैं, क्या ये सबसे डिफिकल्ट थी? क्या ये सबसे मैं यही कहूंगी कि मेरे जो फर्स्ट मैच था, जो जिसके साथ मेरे फर्स्ट मैच था, वो भी मेरे लिए डिफिकल्ट थी। और उसके बाद जैसे जैसे मेरी इम्प्रूवमेंट होती गई तो मेरे को हर अपोनेंट मतलब टफ और एक न्यू चैलेंज मिलता गया, और हर अपोनेंट मेरे लिए चैलेंज था और ये भी मेरे लिए एक न्यू चैलेंज था। ओके, ठीक है। So Jenny, she says that this match was as tough as her first match, yes, but that is the fate of every match of us, or that's what it is to be facing any opponent at any given point in time. This was no different, and she will not demarcate and say this was the most toughest fight of her life. No, for her, every match is
the same like her first match. That's how Ritu Phogat treats each and every match that she fights. She performs as well as she performed on the first day of her MMA career. We have a last question here from Times of India. Have your wrestling skills come to use during your MMA stint so far? Technically speaking, was the switch easy for you? Okay. Ritu, wrestling से क्या आपका कोई भी skills है जो काम में आया हो ये मैच के टाइम पे? और because आप wrestling के एक background से आती हो, क्या आपको और आसान पड़ा है वहां से यहाँ पर switch करना? बिल्कुल मिक्स मार्शल आर्ट में रेसलिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और वो बेनिफिट उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है मेरे लिए टेक डाउन करना काफ़ी इजी है और ग्राउंड में कंट्रोल करना वो काफ़ी इजी है तो इस मैच में भी मैंने अपनी रेसलिंग स्किल हर मैच में मैं अपने जो रेसलिंग स्किल है टेक डाउन करना वो हर मैच में मैं करती हूँ और इस मैच में भी मैंने वही किया. Okay. So Jenny, she says that some of the formative skills of MMA, yes, they've been majorly inspired or they've been majorly taken from her wrestling style. And because of her past in wrestling or because of her twist or because of her strength in wrestling, she finds it easier to take down on her opponent by taking them down on the ground. So takedown is something that she really banks on. It's only because of wrestling that she finds it easy to succeed over her opponent. That's all from us. Thank you so much for your time, Ritu. Go and enjoy this victory, and I'm sure we'll see you very soon. Thank you.